बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड आदाब। जनाब, मैंने बहुत से प्रोग्राम किए हैं जो कोई सियासत के बारे में थे, जम्मू कश्मीर की सियासत के बारे में, आज़ाद कश्मीर की सियासत के बारे में, पाकिस्तान की सियासत के बारे में, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, चाइना एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, बहुत से मौज़ूआत को मैंने कवर किया। और आज मैं चाहता हूँ कि कुछ एक नया सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि मज़हब को जो है ना, विच इज़ पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स, उस पर भी कोई बात की जाए। वो ख़ास तौर पर कुछ ऐसे मौज़ूआत हैं कि जो जिन पर डिस्कशन करने की या सवाल करने की इजाज़त भी नहीं दी जाती है। ये अनफॉर्चुनेट है कि टॉलरेंस लेवल इज़ वेरी बैड। पेशेंस नहीं है, ना लोग सुनना पसंद करते हैं, ना ही उसमें तहकीक करना पसंद करते हैं। तो मेरी एक किताब आई है, शाया हुई है कुछ महीने पहले। उसका नाम है अपोस्टेट डैश मुर्तहद एंड इज पनिशमेंट इन इस्लाम। तो ये मतलब ये कहने का है कि वो लोग जो कि मुर्ताद हो जाते हैं, पहले तो ये डिफाइन करना पड़ेगा कि मुर्ताद क्या होता है। यानी ऐसा आदमी जिसने इस्लाम को कबूल किया, उसके बाद वो इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गया, उसको मुर्ताद कहते हैं। या कुछ इस्लाम के ये जो असूल हैं उनको उसने छोड़ दिया, तो वो उसको भी वो उसी खाते में डालते हैं। तो हमने देखना यह है इसमें कि लेट, मैंने जो लिखा इसमें लिखा है कि लेट द वर्डिक्ट ऑफ द होली कुरान प्रिवेल। उस इन सेकंड जो मेरी उसकी है ना टॉपिक है। तो फिर मैंने आगे जो है ना कुरान पाक की एक आयत को कोट किया, उसको लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन द होली कुरान। कुरान कहता है कि मज़हब में कोई जबर नहीं होना चाहिए। मैं साथ इसमें ये ना मैंने जो लिखा है या और अभी बातें करूंगा आपके साथ, उसमें ये है कि ये मेरे व्यूज़ हैं इन द व्यू ऑफ माय स्टडी ऑफ कुरान। ठीक है। और मैंने हदीस को भी हदीस पाक को भी बयान किया है, और मज़हबी स्कॉलर्स हैं उनको भी मैंने पेश किया है वो क्या कहते हैं। तो जो प्रीफेस है ऑफ द बुक, उसको मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूँ अंग्रेज़ी में। किसी किसी जगह ऑफ कोर्स मुझे उर्दू भी बोलनी पड़ेगी। अच्छा, दिस टॉपिक इज़ वेरी essential, but it is also highly contentious and could possibly lead to trouble and even murder of some innocent people. It is because of the importance of this subject that I dared to write something about this. I sincerely hope that the people with common sense and tolerance will read this carefully, and in this case, listen very carefully by taking the current situation of the 20th century into consideration. I know what general thinking is on this subject and what is the punishment for a person who commits apostasy. In a nutshell, इसको जो jurisprudence है वो ये कहती है कि he must be killed. When this ruling was enacted or this punishment was prescribed, I don't know what the social, political, and tribal uh, situation at that time was. So I'm no one to criticize or disregard that prescription, that आप यानी जो मुर्ताद है उसको मार देना चाहिए। Political, social, and tribal loyalties can change with time, but the verdict of the Holy Quran does not change. So my approach was to seek guidance from the Holy Quran. This is not to suggest that I have not analyzed the social, political, and administrative situation of the time and how tribal loyalties affected the decisions. I want to give an example of the situation and see how that prescribed punishment could be given, or how could it be applicable in England in 2024. My late mother's relative, who lived in England and died in England, um, his daughter, she's an educated woman. Two of her sons, they are just live here. They practice Islam. They went to local masjids, and they belong to Brelvi sect of Islam. She calls me a brother, and we visit each other's house. Her sons are extraordinarily intelligent. In GCSE exams, they achieved 10 GCSEs with 2 A stars. And in A levels,
all subjects they got A grades, which is very, very good. I know them very well. They both were given the same living standard and the same religious education. They both practiced Islam. They could have gone to Oxford University or Cambridge University, or could have become doctor or whatever else they wanted to become. They chose not to study at Oxford or Cambridge. They chose other subjects, and both got first class BSc honors. Both got very good jobs. However, one of them is very religious and has performed Umrah and Hajj. And of course, he practices Islam and prays 5 times. The other son, as unfortunately, has become an atheist. यहाँ पर मैं ये बयान करना चाहूँगा कि हमारे जो इस्लामिक कुछ स्कॉलर्स हैं या मौलवी हैं, वो समझते हैं कि सेकुलरिज्म या सेकुलर जो है ना, वो आदमी होता है, जो सेकुलर आदमी जो इस्लाम या मज़हब को ना मानता हो, जो लादीनियत को फैला रहा हो, या लादीनियत है ये रोंग तशरीह की गई है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या उन मौलवियों बेचारों की अपना इल्म भी इतने महदूद है। जो आदमी लादीनियत हो या लादीन हो, मज़हब को ना मानता हो, अल्लाह को ना मानता हो, उसको सेकुलर नहीं कहा जाता, उसको एथियस्ट कहा जाता है। अगर मौलवियों को ये बात समझ में नहीं आती तो फिर हम क्या कह सकते हैं? सेकुलर का मतलब तो यह है कि इस रियासत का मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। रियासत में जितने भी लोग रहते हैं, वह हिंदू हूँ, सिख हूँ, बुद्धिस्ट हूँ, ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, मुसलमान हूँ, रियासत का काम है कि सबको इक्वली ट्रीट करे। जो उनके फैसले होते हैं रियासत के, वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। हर रियासत के हर शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। इसको सेकुलरिज्म कहा जाता है। मौलवी ने कह दिया कि ये लादीनियत है। अच्छा, एनीवे मैं वापस टॉपिक पर आता हूँ। अच्छा, तो ये लोग ये जो लड़का था, जो ये एथियस्ट बन गया, यानी मज़हब को मानते ही नहीं है। वो कहता है कि मज़हब नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, स्टिल वो मेरा रिश्तेदार है, और वी ऑफ कोर्स गो टू ईच अदर्स हाउस एज वेल। अच्छा, मुझे बताएं कि अंडर द प्रिवेलिंग रिलीजियस थॉट, बिकॉज ही हैज अबैंडन्ड इस्लाम, ही शुड बी किल्ड। रूलिंग तो ये है कि जो एथियस्ट हो जाए, जो मुर्ताद हो जाए, उसको मार दिया जाए। बिलोंगिंग टू ब्रेलवी सेक्ट ऑफ इस्लाम, शुड आई गो एंड किल हिम? अगर मारना जाएगा तो कहेंगे ठीक है भाई, क्योंकि उसने मज़हब को छोड़ दिया है। Some religious fanatics and religious leaders say such a person should be killed instantly, यानी फौरन उसको मार दिया जाए, so that others can learn a lesson. To them, this instant killing will be a credible deterrent to others. यहाँ पर मैं एक पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े रहनुमा थे, डॉक्टर गुलाम हुसैन साहब, जो पीपल्स पार्टी बट्टू दौर में सेक्रेटरी जनरल थे। तो वो कहते थे, मैं उनसे मेरा अच्छा तर्क वास्ता था, तो वो कहते थे कि ये ऊरों के शिकारी हैं, ये शॉर्टकट टू जन्नत तलाश करना चाहते हैं। इनको ये है कि किसी आदमी को, बेगुनाह आदमी को मार देंगे, कहेंगे कि हमने जहाद किया और इस्लाम को बचाया है, ठीक है, और जन्नत के हकदार बन जाएंगे, तो उन्हें मिल जाएंगे हमें। उनको क्या मिलेगा, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। तो आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद दिस माइंडसेट, हु हैज गिवन दिस राइट टू individuals to take the life of another citizen because he has changed his religious beliefs. Has anyone investigated that he has changed his views on religion? And if he has, then who should decide what action should be taken against that person? Some people may point out that the state has the right to take some action against that person. Are we sure that the state has this right to interfere in the religious matters of the individuals and kill them? Even if for a moment we accept that the state has the right to interfere in the matters of faith of citizens, then the question arises, what kind of state has this right? Can we invest this right in the state of Pakistan and a puppet government of so-called Azad Kashmir? If this right is to be given to the state, then the state must be an Islamic state. Do we have any Islamic state in the world? Please enlighten me and tell me which Muslim country could be called an Islamic, and the decisions of which could be accepted by all citizens, not some, all. Like by putting a prefix of Azad
parts of Jammu Kashmir controlled by Pakistan do not become independent. They are not dissolved. Similarly, by calling a country Islamic, that state does not become an Islamic state. Yazid bin Muawiyah succeeded his father and became a Khalifa. True, he was not suitable to become a Khalifa and Caliph and rule the Islamic state, which consisted of many countries, whether we like it or dislike it. In history, he is regarded as a ruler of the Muslims of that time. He was a bad man. He was cruel, dishonest, and corrupt. He had a Muslim name, but no one could see even iota of Islam in his actions. Yet, sadly, many Muslims of that time supported his rule and killed innocent people, including the family of the Holy Prophet. Many, many of the bad and oppressive traditions we find today in Islamic countries can be traced back to the era of Yazid. Are we to rely on the wisdom and judgments of these corrupt rulers and their collaborators and kill people just because they don't follow what we believe? Apart from that, won't it be appropriate to find reasons why young and talented men and women are turning away from Islam? I confess, a lot of educated non-Muslims are embracing Islam, but it is also a fact that many young Muslims are disillusioned with Islamic teaching and the way Islam is taught and enforced upon them. Is this not a wake-up call that we introspect our attitude and behavior and try to find out why our young generation is disillusioned? I'm sure it is not the religion of Islam they dislike. It is what we do in the name of religion and how we treat our children and women in the name of religion. Here I need to explain that many of us can't differentiate between religious laws and cultural laws. यानी culture and religion को mix कर दिया हम लोगों ने. Religious demands or religious ruling could be different to cultural values, and we call that religious as well and try to impose those things. I know for sure there could be thousands of people in District Mirpur of so-called Azad Kashmir alone who are disillusioned with what we people do in the name of Islam, be it in mosques, madrasas, or society as a whole. Are we going to kill all these people who disagree with us on religious views, who, because of what mullahs do in masjids and madrasas and other people do in society, have we them lost faith in Islam? In my opinion, it is our fault because we have failed them. I am sure there are many more young Muslims who fall into that category. Several questions come to my mind. How many people will I kill? What will happen to me if I kill people who have become Murtad or disagree with Islamic views, especially in England? What will happen to me? How this society, the British society, where I have lived peacefully since 1966, will react? What message will be there for non-Muslims? Will my action of killing a young man who has left the fold of Islam send a positive message about Islam? Will this action of killing a man who has not broken any law of the land encourage non-Muslims to embrace Islam? पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब इस तरीके से हम करेंगे तो जो लोग इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं, जब उनको पता चलेगा कि अगर आपने ये बात ना मानी या इस्लाम को छोड़ने का ख्याल किया, आपको मार दिया जाएगा, तो फिर वो जो रूलिंग आती है कि देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, तो वो कहाँ गई? My very close friend and political associate for decades, Abbas Bhatt, advised me not to tread on this track as there are many fanatics in England and they might strike at me as well. I have ignored his advice. I strongly feel we need to introspect what we do and what we practice and should not become blind followers. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, say,
Say what is true, although it may be bitter and displeasing. And I leave it at that because ये preface मेरा खत्म हो गया है. तो I will start with my second episode on this. Further on, I will inshallah try to explain what Quran says on this. And you'll be surprised to know that nowhere in Quran it says that we should kill them. I leave it at that. मेरी तरफ से खुदा हाफिज़ and look after yourself.